exercise 4.3 question number 5 will be discussed in this part. The remaining questions from first question till fourth is discussed in previous parts. You can check the link in description box. So let's start. Question number 5. From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7. For figure 4.6, this is the graph. ये ग्राफ किस इक्वेशन का है? ये हमें चार ऑप्शंस गिवन है. हम वन बाय वन ये जो पॉइंट्स हैं इसके सॉल्यूशंस हैं और LHS इक्वल RHS मींस ये जो पॉइंट्स गिवन है अगर ये गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो वो इसकी ग्राफ की इक्वेशन हमें मिल जाएगी. सो वन बाय वन विल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट वन y इक्वल्स टू x. हम पहले पॉइंट चेक करेंगे. फॉर -1 विल चेक LHS equals to y equal then RHS equals to x equals to -1. LHS not equals to RHS. तो ये तो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, इट इज नॉट अ राइट इक्वेशन. हम सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं. x plus y equals to 0. First of all we'll check for -1 LHS is equals to x plus y equals to -1 plus 1, that is 0. LHS is equals to RHS. इस पॉइंट के लिए तो सेटिस्फाई कर गया. देन फॉर सेकेंड पॉइंट 0 के लिए चेक करते हैं. LHS is equals to x plus y equals to 0 plus 0, that is 0. Again LHS equals to RHS आ गया हमारे दूसरे पॉइंट के लिए भी. Then we'll check for the third point. For 1 -1 LHS equals to x plus y 1 plus -1 1 minus y 1, that is 0. This is also equals to RHS. So LHS is equals to RHS. Therefore we can write here, so x plus y equals, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होगा. x plus y equals to 0 is equation for the given graph. Simply we can write this thing. Then comes second figure, figure 4.7. These are the points -1, 3, 0, 2 and 2, 0. वन बाय वन जैसे हमने प्रीवियस चेक किया था वैसे चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इक्वेशन y इक्वल्स टू x plus 2. we'll check for the first point. For -1, 3 we'll take. LHS is equals to y, that is equals to -1. RHS is equals to x plus 2. x here is, y here was not -1, it was 3. y कोऑर्डिनेट हमारा 3 था, x है हमारा -1 plus 2. 2 minus 1 1. LHS is not equals to RHS. तो ये वाला तो हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया. सेकेंड हम चेक करते हैं इक्वेशन y equals to x minus 2. we'll check again for -1, 3. LHS is y is 3. RHS is x minus 2, which means -1 -2 -3. LHS not equals to RHS. तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया हमारा. थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं हम लोग. y equals to -x plus 2. we'll check for the first point -1, 3. LHS equals to y equals to 3. RHS is equals to -x plus 2. is -1 plus 2 means +1 plus 2, that is equals to 3. तो LHS equals to RHS आ गया हमारा. Then for 0, 2 we'll check. LHS is equals to y, that is 2. RHS that is equals to -x plus 2. 0 plus 2 minus x is -0, 0. That is, we can write here -0 plus 2, that is 2.
LHS is equals to RHS आ गया हमारा. Then we'll check for the last point for 2 0. LHS equals to y, that is 0, and RHS, that is equals to minus x plus 2, means minus 2 plus 2, that is 0. So LHS is equals to RHS. So we can write in the end, I am writing here. So y equals to minus x plus 2 is the equation of given graph. So in this way this question is done. If you have any doubt in any of the portion, you can ask your queries in comment section below.